We have with us today Mr. Virender K. Jetli from Success Mantra. Today he delivered a lecture on positive attitude in a workshop here in PPU, Hisar. Let's start with Mr. Jetli. Sir, welcome to PPU. Thank you. Welcome to Hisar and we welcome you to मेरा देश चैनल. सर, आज का जो लेक्चर था, जो पार्टिसिपेंट्स का रिस्पांस था और जो इंस्टीट्यूट का होस्टिंग एनवायरनमेंट आपने देखा उसके बारे में क्या? देखिए, पहले तो मैं ये बताऊंगा कि ये मेरा पहला विज़िट था हिसार में। ओके सर। तो मैं ड्राइव करता हुआ पहुंचा जी रोहतक और हांसी वगैरह होते हुए हिसार। जी जी तो सबसे पहले तो मुझे लगा कि यहाँ पर काफ़ी प्रगति हुई है, सड़कें वड़कें अच्छी लगी मुझे। जी जिन शहरों से मैं पास करके आया वो भी अच्छा लगा, और कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर देख करके आई वॉज वेरी हैप्पी। इट इज़ एन एक्सेलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, और हिसार जैसी जगह में इतना बढ़िया कॉलेज देख करके मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। एंड बेस्ट पार्ट वाज दैट द कॉलेज इज़ गिविंग ड्यू इम्पोर्टेंस to this type of staff development program, faculty development program. Right. So I really liked it, Right. that they are giving lot of stress on these things. राइट सर. और जो फैकल्टी थी, क्वाइट यंग फैकल्टी, कुछ 2 या 3 लोग थे जो काफ़ी मेच्योर थे और सीनियर थे, जी. अदरवाइज काफ़ी यंग फैकल्टी थी। उनमें भी एंथुजियाज्म, एनर्जी और जोश जो था, जी. उसे देख के आई रियली फेल्ट वेरी हैप्पी। तो सर, आपका जो सक्सेस मंत्रा कंपनी है और जो आपका बैकग्राउंड है दूरदर्शन का एंड अदर चैनल्स का, तो उसके बारे में बताएं कि हाउ यू ग्रेजुएटेड टू अ कंपनी हु इज़ मोटिवेटिंग पीपल, टीचिंग देम हाउ टू टीच इन अ बेस्ट मैनर. तो किस तरह से वो हुआ? आई एम बेसिकली अ टेक्निकल ग्रेजुएट फ्रॉम IIT खड़गपुर। ओके सर. मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में 1979 में बीटेक किया था। जी उसके बाद मैं नेवी में चला गया, जी. and teaching has been my passion while being in the Navy also. ओके सर. Though I was in the technical branch, but I was posted in a place called Jamnagar, and I was on the faculty there for quite some time. राइट सर. और टेक्नोलॉजी एंड प्रोसेसेस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एरिया वगैरह में भी रहा मैं। जी. But over a period of time, I felt that is high time that I shift from technology to processes and now to people. Okay. There's a concept called PPT, people, processes, and technology. ओके सर. Technology is important, processes are important, but it is the people which is the most important. So keeping that in mind, I thought, let me convert my passion of handling people into my profession. राइट सर. That's how I created 2 companies, in fact. One is Success Mantra, which deals with universities and colleges. Okay. And another company called C-Cube Consultants, which conducts programs on business excellence in the corporate world. राइट सर. So there also my focus is on the people. I do say technology is important, processes are important, but ultimately it is the people which is the most important. It is people who use technology, it is people who use processes, and it is people who develop processes and people who develop technology also. So if I can focus on people and bring a change and take them to the next level of excellence, I'll feel quite happy in my life. So That's have why you- my focus is yeah. on people. Have you developed new methods which can help teachers? Yes, I because the very fact my focus for the people is, for example, that they should use the latest technology, like for example PowerPoint presentations. Even today there are colleges who are not using PowerPoint presentations. So one of my lecture today was how to become a great presenter using PowerPoint presentations. What is a good PPT and what is not a good PPT, that's what I try to tell them. So that was very, very important. Another area where we in India tend to neglect a lot is the effective time management. So one of my lecture today was on time management. And tomorrow I am going to talk about communication skills. And today in the morning half I had a lecture on building positive attitude. Because I think that is the foundation for real improvement in your life. And a good teacher, if he has got a good positive attitude, only then he can inculcate those values in the mind of the young students. So if they have a positive attitude, they can inculcate that positive attitude in the minds of the young people also. So मेरा stress इसलिए positive attitude पे भी बहुत रहता है। सर, मैं 1 मिनट इंटरप्ट करूँगा आपको.